Bismillahirrahmanirrahim. So this is an example of the back propagation algorithm. तो ये मैं एक सिंगल हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क को मैं इस्तेमाल करता हूँ और उसके लिए I'll just give you an example for that. तो let's assume कि मेरे पास ये आउटपुट न्यूरॉन्स हैं. Let's considered these to be the output neurons और output मेरे पास O1 से लेके OK तक है. तो if there are K neurons in this output layer, फिर मेरे पास एक hidden layer आ जाती है और hidden layer में भी मेरे पास, and this is primarily fully connected, hidden layer इस तरह से आ जाती है. And then I have got the input layer here, और इसमें भी I have got some neurons. ठीक है, and again it's like fully connected network of this form. ठीक, so I've got a fully connected network of this form that is coming up. So what I'll try to do is I'll just try to give you an expression for updation of these weights इस layer के ऊपर, and I'll call these weights as ij. जहाँ पे मेरे पास, so these weights are basically the connection between the ith and the jth neurons. और यहाँ पे मेरे पास जो inputs आ रही हैं at this particular level, let's consider those inputs to be xi's. So I've got xi's inputs. So ith मेरे पास जो हैं I neurons यहाँ पे जो हैं यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास k neurons हैं. I'll call them j neurons. So the weight matrix that I'll actually be getting is w, and each connection here will be represented by wij. So ij, so 1 would be the first neuron here connected with the first neuron here, so that would be w11, और इसी तरह से बाकियों को जो है ना हम कनेक्शन कर सकते हैं. सो लेट्स से कि अगर मैंने इन वेट्स के लिए या इन वेट्स के लिए अपडेशन एक्सप्रेशन निकालनी है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एक्चुअली हैव टू डू इज आई एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट द लॉस फंक्शन. सो लेट्स अज्यूम दैट लॉस फंक्शन टू बी, लेट्स से क्वाड्रेटिक, और मेरे पास जो टारगेट आउटपुट है उसको मैं लेट्स से टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो मेरे पास जो लॉस फंक्शन आएगा, I'll just take that loss function as, let's call it e, or the error function, let's call it e, and that would primarily be, and that would be a function of, let's say, the weights. So that would be half of the summation of k elements that belongs to the maximum number of the times. टी के मेरे पास टारगेट आउटपुट है, माइनस ओ के मेरे पास जो है दिस इज़ प्राइमरीली द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द नेटवर्क, जो कि मैंने O1 से OK तक रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली बी गेइंग. अच्छा, लेट्स डिफाइन अ फ्यू थिंग्स हेयर. जो मेरे पास न्यूरॉन है, इसमें एज आई टोल्ड यू देयर इज़ एन एग्रीगेशन दैट कम्स अप of all the inputs that are coming in, that is represented by net here. So net j, that is primarily the output, or that is the input that is coming to any jth neuron in my output layer. So let's say j, so I'll represent it by net j. That is the summation of all the wij's times my input I. So this is what the net would be, and then an activation function is applied that would give me my desired output of the network. उसको मैं O से represent कर देता हूँ. तो OJ is my output of a particular neuron. So net J is the aggregation at a particular neuron, and OJ is the output of that particular neuron, and this would be 1 plus, if it is sigmoid function, 1 plus exponent minus net j. ठीक है, so this is what the output of a particular neuron would be. ठीक है, so this is the aggregation that I've got at any neuron at this layer. ठीक है, और उसके बाद O is representing the output after the activation function is applied of this form, right? So this is really important that we need to know. अच्छा, now the important thing is कि if I want to calculate the weight updation
of these weights, any of these weights, ठीक है, that can be represented by the partial derivative expressions. So let me just write down the partial derivative expressions for this particular case. ठीक है, so the partial derivative expressions for this particular case would be that this would be the partial derivative of e with respect to the weights जो कि मुझे निकालने हैं, and the weights are ij, कोई भी weight है. This would primarily be the partial derivative of e, which is the error function, with respect to oj, which is the output of any weight, sorry, any neuron in my output layer. ठीक है, this would be multiplied with the partial derivative of oj with respect to net j, ठीक, and then this would be the partial derivative of net j with respect to the weight ij. So this is what it is actually representing. So in other words, if I represent it in terms of the output neuron, so this is my output neuron. यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ इनपुट्स आ रही हैं. यहाँ पे this is what net j would be represented. So this is jth neuron, net j, and this is oj. So the output that I am getting here is oj. So that is what I am actually getting. So अगर मुझे ये अपडेट एक्सप्रेशन निकालनी है इस किसी एक वेट की, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी जस्ट से कि मुझे इस वेट की अपडेशन एक्सप्रेशन, ओके सॉरी, ओके, मुझे इस उसकी अपडेशन एक्सप्रेशन निकालनी है. ओके, इसकी निकालनी है या इसकी निकालनी है या इसकी निकालनी है या इसकी निकालनी है. इन आइदर केस this would be e here, which I've got the error with respect to oj with respect to net, and net with respect to any of these weights. तो इसलिए यहाँ पे wij मैंने लिखा हुआ, it could be any of these weights. So this is how the partial derivatives would actually be calculated. ठीक है, and let's just put these values now in this particular scenario. तो मेरे पास जो I'll just revert to the color here. तो यहाँ पे मेरे पास जो e की वैल्यू है that is half summation of all the inputs that are coming in. T is my desired output, and OK is primarily the output of the neuron जिसका weight मैंने of any of my output neuron. So this is my error function. The first derivative that I have to calculate is the partial derivative of e with respect to oj. Okay, so if I calculate this comes out to be minus tk minus oi. Okay, so this is what I'll actually be calculating. You can j भी कह सकते हैं आप. So this is with respect to j primarily, if I have to calculate it with respect to j. ठीक है, so this is what this partial derivative would be. The next is primarily the partial derivative of your next partial derivative, that is of net j with respect to weights. ये भी आपको करना है आई जे के हिसाब से, and because net is primarily the summation of wij into xi, और इसका partial derivative with respect to wij मुझे calculate करना है. If I calculate this comes out to be xi. ठीक है, so this is the partial derivative of the net with respect to wj. And finally जो third partial derivative है मेरे पास, that is the partial derivative of o j with respect to net j. This is what the partial derivative is, and that would primarily be, if you calculate, and o is primarily what, a sigmoid function applied on net. Okay, so this would be partial derivative of this net j with respect to a 1 over 1 plus e to the power minus net j.
So this is what this partial derivative would look like. अच्छा जी, तो if you calculate this partial derivative comes out to be oj into 1 minus oj. So this is the partial derivative that actually comes out. So you can actually calculate this yourself, and this is the final answer that you'll actually be getting. Acha, so therefore, if I want to now find out the overall weight updation expression, so this would be partial derivative of E with respect to Wij. This will be equal to partial derivative of E with respect to Oj times partial derivative of Oj with respect to net J times partial derivative of net J with respect to Wij. ठीक है. And if you just put all the things in जो partial derivatives हमने ऊपर calculate किए हैं, this comes out to be minus t j minus o j times o j into 1 minus o j times xi. So this is what you'll actually be getting. ठीक है. And this is what is the final answer that we actually calculate. अच्छा, for simplicity what you actually do is कि E with respect to net जो है, so for example for simplicity what you do is कि let me just कि इसको जो है, इस पूरी टर्म को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं. डेल्टा जे इज़ प्राइमरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई with respect to net j, and that comes out to be t j minus o j times o j into 1 minus o j. ठीक है, और इसको हम डेल्टा जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज़ के आई कैन एक्चुअली represent this as the final expression partial derivative of E with respect to Wij. This comes out to be delta J times Xi. ठीक है, where delta J is actually represented by this expression जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है. ठीक है, simplicity के लिए जो है this can actually be represented here. I hope this is clear. And similarly, if you want to similarly we can actually, if we have a network of this form, for example, यहाँ पे मेरे पास outputs हैं, फिर मेरे पास hidden layers आ गई हैं, और फिर मेरे पास input layer आ गई है यहाँ पे. और अगर मुझे ये weight matrix के लिए अपडेशन निकालनी है, so ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. so अगर मैंने इस weight matrix के लिए अपडेशन निकालनी है, तो देन आई थिंक अप्लाइंग द सेम बैक प्रोपोगेशन रूल वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट दिस के जी. so error with respect to these this would be okay, let me just erase this. Okay, so this would be primarily so the error that I'll actually be getting at this level, that would be with respect to the output of this neuron, and then the aggregation of this neuron, the aggregation of this with the output of this neuron, and then the aggregation of this neuron, and then maybe this weight जो भी मैंने इसका weight निकाला है. So this is how the chain actually continues. ठीक है, so I can actually write down, find out the value of delta in this particular case, or just to be on the safer side, I'll just give you the final expression. अगर यहाँ पे मेरे पास k न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे मेरे पास इस लेवल के ऊपर j न्यूरॉन्स हैं, इसका इंडेक्स j है, और यहाँ पे मेरे पास i न्यूरॉन्स हैं, तो Wij जो है ना, वो मुझे अपडेट एक्सप्रेशन अगर निकालनी है, दैट फाइनल अपडेशन एक्सप्रेशन जो है वो partial derivative of E with respect to Wij. Remember
this wij are now representing the hidden layer and in the input layer. ठीक है, पहले हम जो कर रहे थे वो इस लेयर के बारे में, इस वेट मैट्रिक्स के बारे में कर रहे थे। अब हम एक स्टेप और पीछे चले गए। तो इसके लिए अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ, सो दिस इज़ प्राइमरीली दैट कम्स आउट टू बी द समेशन of all k that belongs to the parent neurons. Let's call this parent neurons as j neurons. So this would be minus alpha k times partial net of k divided by partial net of j times my input. So the input is primarily that is coming in at this level now. ठीक है, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको जो है दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। इफ़ यू डोंट रियली अंडरस्टैंड द फाइनल एक्सप्रेशन, रियली नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि असल मकसद जो है इसमें, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस चेन रूल दैट हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव्स, आपको ये फाइनल एक्सप्रेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल primarily not be tested on deriving these expressions, but basically chain rule के ऊपर you can actually be tested, right? Okay, I hope this is clear and this is understood very well. Thank you.